let's back to our topic, that is acne. Yes, arsenic alb is always there for acne when we get the modalities. Modalities like arsenic alb की modalities कौन सी होती है guys? Anyone? Hot amelioration. Yes, hot application amelioration. Along with that, when we get the fastidiousness, along with that, we got the perfectionist personality. In those cases, we can think of arsenic alb. Having desire to drink hot water, having desire to eat garam khana. When you are prescribing arsenic alb, confirm with the patient. आपको गरम खाना पसंद है? पेशेंट बोलेगा गरम नहीं, बहुत गरम. मैं दाल उबली हुई ही पीता हूं. गरम गरम वो स्टोव पे से नीचे उतार के तुरंत पीता हूं. If it is there, your prescription is confirmed. चाय मुझे ठंडी पसंद नहीं है. I like to drink hot tea only. बहुत गरम वाली. That is arsenic. Arsenic is always there. You can think of this remedy. These are the common remedies which we are prescribing frequently. Yes, as I told you, Eugenia is there. Eugenia is the specific medicine for acne. Dalcamara, sometimes we are using. Dalcamara helps when there is occur after change of weather. Change of weather के बाद aggravation होता है तो think of Dalcamara. As we all know, cosmetic use के बाद जब acne होता है तो उसके लिए remedy is Bovis. remedy is Bovista. Yes, constipation is one of the cause के जिसकी वजह से acne होता है. That is according to Ayurveda and that is we have clinically seen. तो जब भी acne का cause is gastric cause, when eruptions are begin from the gastric or gastric cause of skin eruption, you can think of antium crude. Along with that, when there is constipation and constipation की वजह से acne हो रहा है, तो you have remedy that is calcarea silicata. From my side, that is the single remedy if I am not wrong. निकालो. Face acne constipation due to. ऐसा कोई है rubric? या मैं गप्पे मार रहा हूँ? Two remedies are mentioned in rubric. One is Nux vomica and one is calcarea silicata. Face eruption acne constipation with. बहुत बच्चे आएंगे, बहुत teenage girl आएगी having such condition. And the next rubric is cosmetic from the single remedy, that is Bovista. If it is cystic, the single remedy in repertory, there is acid nitricum. We are prescribing thiocyanidin, we are prescribing calcarea fluor in cystic acne. Yes, in the next rubric is drunkard in. So as we discussed, Ledampal is there. Along with that, you can think of Nux vomica. If the female is fair, rubric is there. Acne eruption, face fair female, you can think of creosote. The single remedy is there. Or one more rubric is there. Face eruption, acne, fire near a. आप हमारे पास आए हो माउंट आबू में, आपने बॉन फायर किया है, आपने कैंप फायर किया है और उसके बाद एक्ने हुआ है, तो यू कैन थिंक ऑफ द रेमेडी दैट इज एंटियम क्रूड. सर क्रियोसोट का कौन सी पोटेंसी है? क्रियोसोट यू कैन थिंक ऑफ इन 200 पोटेंसी. 200 में दीजिए. दूसरी ब्यूटीफुल लेडी कौन सी होती है? बेलाडोना ब्यूटीफुल आईज होती है. बेलाडोना. प्लेटिना खुद को ब्यूटीफुल समझती है. यस, दैट इज ब्यूटी. एशियन स्किन होती है प्लेटिना की एंड शी फील्स दैट शी लुक्स बेटर देन अदर. लेकिन वो अच्छी हो ना हो, दैट इज डिफरेंट थिंग. लेकिन she feels like that. And yes, phosphorus is always there. Beautiful personality with clear white skin, that is phosphorus. So उसके साथ साथ you can think of creosote, acne in beautiful girls.
Yes, our wonderful remedy, that is Netramure. हमारे क्लिनिक के दिन की 70 या 80 के 100 जितनी भी ओपीडी होती है उसमें से 70% पेशेंट रिक्वायर नेट्रामाइन। एंड एक्ने के अंदर लोगों को बहुत दुख है लाइफ में। This is the era where we are getting many post patients having ailment after mental stress. तो उसके अंदर नेट्राम्यूर works excellently. And excessive dryness on lips with excessive oily secretion, think of netramure. आपके पास लेडी आई है, आपको पास एलिमेंट मिल रहा है कि भाई इसको स्ट्रेस है, and when you examine and patient को dry lips है, cracked lips है, especially in the middle of the lip, and along with that oily face, don't think of anything, prescribe netramure. Believe me. Sir, potency, Netramure. 1 m every week. आज एक लड़की को 1 m ओडी दिया है, फ्रॉम द अपीयरेंस, फ्रॉम द लिप्स और उसकी ऑयली स्किन, नेट्राम्यूर 1 m ओडी. Yes, you can think of antium crude, especially with the comedones and along with gastric origin. और जिसकी भी स्किन ठीक होती है, थिक डर्टी स्किन इज एंटियम क्रूड, जिसको खाने की इच्छा होती है. क्या खाने की इच्छा होती है एंटियम क्रूड को? Pickles. गाइस स्पेसिफिक मेडिसिन, या सावर थिंग. सो स्पेसिफिक मेडिसिन तो आपको प्रिस्क्राइब करनी ही है, लेकिन डोंट प्रिस्क्राइब रैंडमली. उसके एसोसिएटेड सिम्टम ढूंढो, उसके एसोसिएटेड सिम्टम मिल रहा है, देन दैट मेडिसिन मिल रहा है. स्पेशली एक्ने इन रोजेसिया, यू कैन थिंक ऑफ radium brome. We are frequently using radium brome in red acne, in redness, in acne rosacea. Some group of remedy कि सर जैसे ही मेंसेस आता है उससे पहले एक्ने हो जाते हैं, तो एक्ने बिफोर मेंसेस, we have wonderful remedies. One is sorinum, one is magmure, one is sepia. These three are leading remedies. Graphite. And graphite is in repertory. But we are using these three remedies: sorinum, sepia, and magmure. Yes, any eruption symmetrical, if it is psoriasis, if it is acne, if it is eczema, think of arnica. Symmetrical eruptions, that is arnica. Someone told about the uforinum. We are not using uforinum for acne, but yes, in the case of PCOS, you can think of uforinum. प्रीमेनोपॉजल कंडीशन में ओफोरिनम दी जा सकती है. Okay, definitely we can think of uforinum in cases of hormonal disturbance. जब भी hormonal disturbance की बात आती है, if the prolactin is excessive secretion, if LH and FSH is disturbed, the ratio is disturbed, we can think of uforinum as a complementary remedy. Yes, someone told about heparsalve. Yes, heparsalve helps when there is acne with pus formation. If the patient is chilly, excessive chilly, think of heparsalve. Thuja, you can think of in comedones as a complementary remedy. In some cases, we prescribe Thuja 200 every morning or every day in cases of comedones. If there is only comedones, no acne, no expectoration, no pus formation, only comedones are there, you can think of Thuja 200 or Thuja 1 MOD. Sometimes dandruff is the cause of acne. In those cases, you can think of treating a dandruff first. जितने भी बैक के ऊपर एक्ने होते हैं उनके केसेस के अंदर dandruff might be the cause. So we have to treat dandruff first, seborrheic dermatitis first, then we can think of acne. We have one wonderful remedy with comedones with oily face, that is selenium. Selenium having comedones along with oily face, we can think of selenium. Blackheads के लिए this specific is
एसिड नाइट्रिकम, ब्लैक पोर्स हो जाते हैं, तो इन दोस केसेस वी कैन थिंक ऑफ एसिड नाइट्रिक. Another remedy is sabina, that is also for plaquettes. Sir, potency acid nitricum. Acid nitricum 200 HS. Generally, we are using acid nitricum every night. That also helps in cases of constipation. Yes, thuja, antium crude, all the antipsychotic remedy having growth. We can think of calcarea carb sometime. In typical personality of calcarea carb is there. If support is there, if mother is required at the teenage, we can think of calcarea carb. You all know calcarea carb is grown up with protection. बहुत वेल नोन फैमिली है, बच्चे 3 बच्चे या 2 बच्चे हैं, बड़ा बच्चा इज रिस्पॉन्सिबल, छोटा बच्चा ग्रोन अप विद द प्रोटेक्शन, अभी तक लाइफ में बाहर नहीं गया है, मम्मी पापा के बिना नहीं रह सकता है, उसके बिना नहीं चलता है. In those cases, you can think of calcarea carb. सर आपने सबाइना के बारे में क्या बताया कंडीशन? Black pores or black comedones. It is written in boric. Yeah. बस इतनी छोटी छोटी मेडिसिन है, छोटा छोटा टॉपिक है, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इन प्रैक्टिस, लेकिन these few remedies, the 20 or 30 remedies that helps in cases of acne. जितने भी स्किन डिसीज वाले केसेस आते हैं उसमें एक्ने इन टीनेज इज वेरी कॉमन गाइस. इफ यू हैव ट्रीटेड एक्ने इन योर प्रैक्टिस, बहुत सारे टीन पेशेंट आपके वहां पे आएंगे, दे आर फाउंड ऑफ, वो अपने फ्रेंड्स को भी लेके आएंगे. सो ट्राई टू क्योर एक्ने इन योर प्रैक्टिस. Yes, along with that, you can use our face wash. You can use any face wash to reduce the secretion of that sebum. In those cases, you can think of any face wash. बहुत सारे face wash market में available है. You can use de-acne face wash. You can use any kind of acne face wash. Oily face वाले patient को ask them to use 2 times a day while bathing and before sleep. और बर्बेरीज एक्विफोलियम जो लोग मदर टिंचर में यूज करते हैं, तो उनको बोलो कि रात को फेस वॉश करने के बाद यूज बर्बेरीज एक्विफोलियम. इफ इट इज समर सीजन, आस्क देम टू यूज विद रोज वाटर में मिक्स करके लगाओ. इफ इट इज विंटर, आस्क देम टू यूज विद मॉइस्चराइजर के अंदर डाल के लगाओ. बर्बेरीज एक्विफोलियम की ट्यूब्स भी आर आल्सो अवेलेबल. You can think of the tubes also. Yeah. So acne in forehead only. We are using Carbovage CV that helps in acne on forehead. बहुत सारे टीन एज वाले आते हैं जिनको एक्ने ऑन फोरहेड होता है, तो फोरहेड वाले एक्ने वाले को पेशेंट को पूछोगे डू यू हैव डैंड्रफ, सो डैंड्रफ वाले पेशेंट को फोरहेड पे एक्ने बहुत होता है. And sir अगर dandruff नहीं है, तो रेमेडीज रिमेन सेम, लेकिन डैंड्रफ है तो यू हैव टू ट्रीट डैंड्रफ अलोंग विद कार्बोवेज. okay. यस, सिमिसिफुगा इज देयर. टीन एज फीमेल के अंदर कॉमेडोन्स हो या रेडनेस हो या डिस्कलरेशन ऑफ एक्ने हो, इन दोस केसेस यू कैन थिंक ऑफ सिमिसिफुगा. फेशियल ब्लेमिशेस इज मेंशन्ड इन बोरिक, तो हाइपरपिगमेंटेशन होगा, that is also considered in facial blemishes. So you can think of melasma in teenage, think of simisip. Sir in male also medicine are same. Forehead. Same. और मेल के अंदर ब्रांडी पूछो, you will get it. आपको मिलेगा. Sorry. फीमेल को भी पूछनी चाहिए ऐसा कहना. हाँ, फीमेल को भी. Nowadays guys, that is common in female also. I'm really very sorry. हाँ जी, बोलो. तो एक सिम्टम है, एक पेशेंट है, उसको मतलब दिन में चाय बहुत ज्यादा चाहिए,
बट है ना, वो चाय नहीं पिएगा तो उसको एसिडिटी होती है, सर दर्द करता है, उल्टी हो जाती है, उसको वॉमिटिंग हो जाती है, मतलब पूरा पागल सा हो जाता है, विड्रॉल हो जाता है वो बंदा। ओपन डायस्कोरिया गाइस, ओके निकालो डायस्कोरिया निकालो। क्या मेंशन किया है डायस्कोरिया में? लेट्स रीड इट। आई जस्ट क्लिक्ड डायस्कोरिया, लेट्स कंफर्म इट इज मैचिंग विथ योर केस और नॉट। क्या है भाई डायस्कोरिया में? निकालो। टी ड्रिंकर्स में क्या है? एसिडिटी। बोलो बोलो जोर से बोलो। People with feeble digestive power, tea drinkers with much flatulence. हाँ, टी ड्रिंकर्स के अंदर जब भी एसिडिटी होती है और ये गैस्ट्रिक कंप्लेन होता है, यू कैन थिंक ऑफ डायस्कोरिया। राजवीर। यस सर हाँ, pain suddenly shift from neutral appear remote location finger. Can anyone read stomach from diascoria? Anyone? Mouth dry and bitter in morning, tongue coated, no thirst, belching of large quantities of offensive gas, neuralgia of stomach, sinking at the pit of the stomach, pyrosis and pain along sternum and extending into arms, eructations of sour, bitter, wind with hiccough, sharp pain in epigastrium relieved by standing erect. Yes. So guys, diascoria is the specific remedy for tea drinkers. जितने भी टी ड्रिंकर्स वाले पेशेंट आते हैं, if they left tea और उनको चाय पीने की वजह से भी तकलीफ हो रही है, तो you can think of this complaint. और Thea दी साथ, Thea medicine, सॉरी, Thea medicine, कौन सी मेडिसिन? Thea टी में से ही बनी हुई है। ओके, वो मुझे पता नहीं है, स्पेल आउट करो। THEA दैट इज चिया सीड। चिया सीड नहीं होता। Sorry. स्पेल आउट TH EA THEA sinking sensors in epigastric. हाँ, you can think of this medicine, Rajveer. Sudden production of wind in large quantity. भाई दे सकते हो, definitely we can think of this remedy. Also after tea or tobacco, Abyss nigra. Abyss nigra is there for tea drinkers. In dyspeptic problems of age राजवीर निकालो एबिस नाइग्रा, आपका केस सॉल्व हो जाएगा आज। with functional heart symptoms, also after tea. सर, ये आपका नहीं, मेरा केस है खुद का। ओके, खुद का। यस, मुझे सर सुबह 6 से पहले चाय नहीं मिलेगी तो मेरे को उल्टियाँ हो जाएगी 7 बजे, तो ओके, वापस 11 बजे नहीं मिलेगी तो उल्टियाँ हो जाएगी, मतलब मुझे चाय चाहिए बस दिन में 5-6 बार, आप तो आपको तो ट्रीट करना ही है। और रात को भी 11 बजे चाय चाहिए, नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आती है। निकालो निकालो, एबिस नाइग्रा में लिखा हुआ है। Yes, sir. हाँ, क्या लिखा है पूर्वी? Most of the symptoms are associated with the gastric disturbance in dyspeptic troubles of the aged with functional heart symptoms, also after tea or tobacco. Constipation, pain in external meatus. हमारे केस में ओल्ड एज नहीं है, हमारे केस में यंग एज है, लेकिन दैट इज ओके, वी कैन यूज इट। एबिस नाइग्रा इज वन ऑफ द गुड रेमेडी फॉर GERD। GERD में अच्छा हेल्प करती है। We are using this remedy specifically for the patient having GERD, regurgitation, रात को भी तकलीफ बहुत होती है, तो राजवीर think of this remedy in your case, in you specifically. Yes sir, yes sir. 200 OD, use it. Yes sir, yes sir. Next follow up में बताना कैसा रहता है. And along with that you can think of tabacum, along with that you can think of ipecac, along with that you can think of lobelia. Lobelia and tabacum both are prepared from tabacum, जिसमें nauseative severe complaint होती है,
Deathly nausea, you all know that is tea begum. So think of these remedies.